Hello, dear children. Welcome to the class. In our previous classes, we have learned how to charge depreciation in the asset account. We had also done few questions based upon straight line method of providing depreciation. Now in today's class, we'll be learning new concept in which we learn the concept of provision for depreciation account. Now, before starting the concept of provision for depreciation, let us first recapitulate. See, when depreciation is charged to the asset account, when depreciation is charged in the asset account, then we pass the journal entry. Depreciation being revenue expenditure, expenses are to be debited. So depreciation account debited to asset account. Why asset account is credited? Because the value of asset gets reduced by charging depreciation. So let's say if the depreciation is charged 1,000 per annum. So we pass this entry, depreciation account debited to asset account. Reason, again I'll repeat myself, depreciation is a revenue expenditure. Revenue expenditure, the rule says that debit all expenses. So we pass the entry, depreciation account debited to asset account, and finally depreciation is a nominal account. We'll close this nominal account by transferring its balance to the profit and loss account, and your depreciation account is closed. Profit and loss account debited to depreciation account. हमने depreciation account का balance profit and loss account में transfer कर दिया, and finally the depreciation account is closed. Fine. Now we have also learned that if I prepare the asset account में, let's say I'm not going to prepare the whole complete asset account, just to recapitulate the thing. जब हम asset account prepare करते हैं बेटा, asset account, fine, this is the debit side of the ledger account, this is the credit side. जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, जब कम होता है तो क्रेडिट होता है. लेट्स से जब मैंने एसेट खरीदा था तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, लेट्स से 1 लाख का और 10,000 का एसेट हमने खरीदा. इसके ऊपर इफ आई पोस्ट दिस एंट्री इन द एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड on the credit side of the asset account, let's say 1,000 rupees. Fine. And then we record the balance of the asset account. Balance closed down at the end of the financial year, 9,000, and the asset account is closed. This is how we had done so far when depreciation is charged to the asset account. But actually depreciation, it's a non-cash expense. See, all of us know that depreciation is a non-cash expense. See, depreciation, it's a revenue expenditure. और इस एक्सपेंडिचर और बाकी सब एक्सपेंडिचर में बेटा यही डिफरेंस होता है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है. रीजन बीइंग, देखिए सपोज आई हैव पेड अ सैलरी, ठीक है, हमने सैलरी पे करी. सैलरी हम क्या करते हैं, जब सैलरी पे करते हैं व्हाट एंट्री डू वी पास,
we say salary account debited to bank account. Salary account debited to bank account. तो क्या हुआ बेटा कि ये जब हमने सैलरी पे करी तो हमारा बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉ हो गया, बैंक अकाउंट कम हो गया, या बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट रिड्यूस हो गया. फाइन, दैट मींस कैश इज गोइंग आउट ऑफ अवर बिजनेस. लेकिन अभी जब हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करी थी, depreciation charged, fine, when depreciation is charged we recorded the entry depreciation account debited to asset account. हमने उसको एसेट में चार्ज किया था and cash is not going out of the business. Fine. So now where are we going to accumulate this amount? हम अपना बेटा प्रॉफिट तो रिड्यूस कर रहे हैं इस अमाउंट से. अभी हमने देखा क्लोजिंग एंट्री भी हमने पास करी थी, हम अपना प्रॉफिट डेप्रिसिएशन की अमाउंट से रिड्यूस कर रहे हैं. नेक्स्ट एंट्री वी पास्ड was profit and loss account debited to your depreciation account. Profit and loss account, अभी हमने ये एंट्री पास करी थी ना, debited to depreciation account. अब बेटे मेरा प्रॉफिट तो रिड्यूस हो रहा है डेप्रिसिएशन की अमाउंट से. बाकी सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि अगर प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है तो कैश भी बिजनेस से बाहर जा रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. तो इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है वो हम क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते रहते हैं. डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते रहते हैं किस अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में. डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन which we are charging on the asset, instead of debiting it, crediting it, we are crediting it. Instead of crediting depreciation in the asset account, we open a account known as provision for depreciation account and starts accumulating the depreciation on the asset in provision for depreciation account. So the second case, when depreciation is accumulated, or you can say charged in provision for depreciation account, fine. So instead of passing this entry, depreciation account debited to asset account, what entry do we pass? We say depreciation account debited, ये तो डेबिट ही होगा बेटा क्योंकि ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब क्या होता है बेटे कि हम ये जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन अप करके हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल की चार्ज करते जाते हैं. फाइन, दैट मीन्स इन दिस केस द एसेट अकाउंट विल नॉट गेट रिड्यूस. एसेट हमारा परचेज प्राइस, जो हमने एसेट जिस प्राइस पे कॉस्ट पे परचेज किया होता है उस पे शो होता रहता है, और डेप्रिसिएशन जो भी एनुअल डेप्रिसिएशन हम एसेट पे चार्ज करते हैं उसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट करते जाते हैं. And finally, at the end of the financial year, we'll pass the closing entry, and the closing entry would be, this is the first entry, and then afterwards we'll pass the closing entry to close the depreciation account by transferring the balance of depreciation account to your profit and loss account. Profit and
loss account. So the entry will be profit and loss account debited to depreciation account. To depreciation account. Fine. अब following the same example जो अभी हमने last case में किया, see when depreciation is charged to the provision for depreciation account, we said कि फिर asset account में तो इसको depreciation को हमने charge नहीं किया, तो asset account will be shown at the purchase price or the cost price at which the asset was purchased. Let's say the asset was purchased at the beginning of the financial year. Let me put the date now. Let's say on 1/4/2019. Fine. 1st April 2019. An asset was purchased to bank account for rupees 10,000. An asset was purchased for rupees 10,000. Fine. Now we are charging depreciation and accumulating it the same in the provision for depreciation account. So what we are doing is we are going to charge depreciation. We are going to open another account known as provision for depreciation account. So when provision for depreciation account is opened, fine, it has got credit balance. Fine, you can see if we post this entry, तो ये posting कहाँ होगी? Provision for depreciation account की credit side में we'll write by depreciation. Fine, by depreciation account. Let's say for the whole year, we provided the depreciation and the entry we are recording on 31st of March 2020. Fine. So depreciation recorded was 1,000. Fine. Now the year is closed. We'll transfer this depreciation and close it by transferring the balance to profit and loss account. And now how are we going to show? The asset account will be closed on 31st of March 2020. That is at the end of the financial year. By balance close down, amount is 10,000 and the account is closed. Fine. And then we'll transfer this balance at the beginning of the next financial year. That is on 1st April 2020. We'll write two balance brought down. This balance is to be transferred in the next financial year. And then same happens with the provision for depreciation account. We'll write on 31st of March 2020. Two balance close down 1,000. ये अकाउंट मेरा बेटा क्लोज हो गया और इसका भी बैलेंस I will take it in the next financial year, that is on starting on 1st of April 2020, and I'll write here by balance brought down 1,000. Fine. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर हमने ऐसे दिखाना है तो हम एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? फाइन. सो व्हाट डू वी डू इन बैलेंस शीट at the end of the financial year? When we prepare the balance sheet, we will show asset account on the asset side. हम जो भी respective asset है, machinery है या furniture account है, so what will we do? This is your balance sheet. Balance sheet में right hand side is the asset side. So what are we going to do? We are going to show this respective asset account rupees 10,000 less provision for depreciation. And this amount is 1,000. This is going to be reduced and we are going to write the net figure of this asset 10,000 minus 1,000, which is equal to 9,000 at the end of the first financial year. And this whole process will continue. ये कंटिन्यू रहेगा बेटा तब तक जब तक एसेट सेल नहीं होता. एसेट
10,000 का हमने खरीदा था, 10,000 की वैल्यू पे ही शो होता रहेगा जब तक ये सेल ऑफ नहीं होता। इसके ऊपर जितनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगी ईयर आफ्टर ईयर, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में एक्यूमुलेट होती रहेगी। तभी हम इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसके ऊपर सपोज सेकेंड ईयर की भी, आई हैव यूज्ड दिस एसेट फॉर सेकेंड ईयर, सो सेकेंड ईयर में अगेन ऑन 31st of March 2021, fine, let's say 31st of March 2021, let me write it. Over here on the top, just a sec. Now because of paucity of space, I first prepared the account simultaneously downwards. Now I have prepared the same account, asset account. Asset was purchased on 1st April 2019 to bank account 10,000, and when depreciation is provided, depreciation is going to be provided through, or it is charged to your provision for depreciation account at the end of the financial year, which is closing on 31st of March 2020 by depreciation account 1,000. Fine. And then we learned how to show it in the balance sheet. Then at the end of the financial year, we are going to take the balance of the asset account by balance closed down 10,000 as it is at the beginning of the next financial year, that is on 1st April 2020, to balance brought down 10,000. Regarding the balance of this provision for depreciation account, once we have provided the depreciation in the provision for depreciation account 1,000, then जब तक बेटा एसेट सेल ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड करते रहेंगे, जैसे कि हमने एसेट अकाउंट का बैलेंस प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड किया। फाइन, सो हियर we provided depreciation on 31st of March 2020 by depreciation account 1,000. Then on the same date और कोई डेप्रिसिएशन नहीं है और कोई एसेट नहीं जिसपे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है, सो टू बैलेंस क्लोज्ड ऑन 1,000 एंड दिस बैलेंस इज टू बी टेकन फॉरवर्ड at the beginning of the next financial year, that is 1st April 2020 by balance brought down 1,000. अब बेटा नेक्स्ट ईयर भी अगेन हमने ना ही कोई एसेट परचेज किया ना ही कोई एसेट सेल किया, we'll again provide depreciation. Then this year is going to end on 31st of March 2021. Fine. Let's provide depreciation for the whole financial year. So by depreciation account 1,000 again. Fine. And now you see कि depreciation amount is being accumulated in this account, provision for depreciation account. आप देखिए depreciation की amount इसके अंदर accumulate होती जा रही है. Fine. And then at the end of the current financial year, second financial year, that is on 31st of March 2021, we'll write by balance closed down. कोई एसेट ना सेल किया ना हमने परचेज किया, तो एसेट अकाउंट का सेम बैलेंस 10,000 आएगा and this account is closed. We'll take the balance on 1st April 2021 as it is, to balance brought down 10,000. Fine. And now the balance of the accumulated depreciation account on 31st of March 2021 will be to balance closed down. This is 2,000. ठीक है बेटा, तभी I'll just repeat myself, तभी हम क्या करते हैं, हम इस अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी डेप्रिसिएशन हम एसेट पे प्रोवाइड करेंगे वो एक्यूमुलेट होती जाएगी. एंड दिस सेकेंड ईयर इट इज ऑल्सो क्लोज्ड. Fine. We'll take this balance 2,000 at the beginning of the next financial year
that is, it is beginning on 1st of April 2021. Buy balance brought down. Buy balance brought down 2000 now. Fine. Now, the rule is, let's say now on 1st April 2021, we are selling this asset. जो हमने 10,000 का asset purchase किया था बेटा, वो हम at the beginning of the third financial year, that is on 1st April 2021 को sell off कर रहे हैं. ठीक है बेटा, जब हम sell off कर रहे हैं तो इसके ऊपर जो accumulated depreciation है, right from the date of purchase till the date of sale, है ना, इस accumulated depreciation को भी हमें खत्म करना होगा. इसका हम क्या करेंगे, जब asset ही नहीं रहा हमारे बिजनेस में, जब हमने इसको sell off कर दिया, तो हम depreciation, accumulated depreciation इस asset की क्या करेंगे, we also have to close it down. Now the rule is that at the time of sale of the asset, you may make a note of it. Let's first understand the journal entry and then we'll see its effect on the respective ledger account. At the time of sale of the asset, fine, provision, accumulated depreciation is transferred from provision for depreciation account to asset account or asset disposal account. Again, I'll repeat myself. At the time of sale of the asset, accumulated depreciation account, accumulated depreciation on the asset from the date of purchase, from the date of purchase of the asset to the date of sale, to the date of sale of the asset is transferred to asset account. Fine, it is transferred to asset account. So the required journal entry which needs to be passed at the time of sale of the asset is provision for depreciation account debited to asset account or asset disposal account. हम क्या करते हैं बेटा, एक अलग अकाउंट जो एसेट सेल ऑफ हो रहा होता है उसकी अकाउंटिंग को शो करने के लिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन अप कर लेते हैं. तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अगर एसेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कहां से लेके कहां तक, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट टू द डेट ऑफ सेल ऑफ द एसेट, जितनी हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी है उस एसेट के ऊपर, उसको हम या तो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे या एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. एंड द एंट्री व्हिच इज पास्ड इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट. So see, if provision for depreciation account is debited and the amount is transferred to your asset account or asset disposal account, now see, provision for depreciation account की डेबिट साइड पर on 1st of April 2021, क्योंकि इसी दिन हम एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, we'll transfer the whole accumulated depreciation 2000, क्योंकि 2000 ही है टोटल डेप्रिसिएशन इस एसेट के ऊपर चार्ज हुई.
we'll transfer it to the asset account. अभी हम asset disposal account नहीं open कर रहे, हम ये सारा का सारा amount accumulated depreciation का 2000 का 2000 एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं. अगेन रीजन यही है, जब एसेट ही सेल ऑफ हो जाएगा तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों रखेंगे, इसको भी हम क्लोज कर देंगे एंड वी विल ट्रांसफर ऑल द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू द रिस्पेक्टिव एसेट अकाउंट. तो मेरी एंट्री अगर पास हुई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर टू एसेट, तो एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ऑन 1st of April 2021 by provision for depreciation account, provision for depreciation account, and this is 2000. भाई ये मेरी 2000 depreciation यहाँ आ गई. अब बेटा let's say that this asset is disposed of for rupees 7000 or let's say 6500. Fine. So if this asset is disposed of for rupees 6500, so by bank account, now entry will be bank account debited to asset account. So by bank account 6500. Now 10,000 का asset था बेटा, उसके ऊपर 2000 accumulated depreciation थी. 10,000 minus 2000, इस asset की book value थी 8,000. Fine. इस एसेट की बुक वैल्यू थी 8,000. कैसे आई? 10,000 का एसेट, उसके ऊपर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टिल द डेट ऑफ सेल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2000. तो जिस डेट को एसेट सेल ऑफ हुआ यानी कि ऑन 1st April 2021, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट विच इज शोन इन द बैलेंस शीट इज 8,000. अब ये एसेट बेटा सेल ऑफ हुआ है 6,500 का. फाइन. सो the balancing figure, fine, if I subtract it, I am going to get 1,500. And what is this 1,500? 1,500 is the loss on sale of the asset, and this loss is to be transferred to your profit and loss account. So we'll write loss on sale of asset 1,500, and when we'll total up, this is 10,000, 10,000. So asset account is also closed. I hope that the accounting treatment of provision for depreciation account or accumulated depreciation account is clear to everyone. We'll practice few more questions in the next session. That's all for today from my side. Thank you very much.